Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we are going to start a new lesson, lesson number 3 of history, that is Delhi Sultans. I hope you have opened your book Yes, ma'am. and a pencil is Yes, ma'am. in your hand. Okay, fine. So today we'll start with this lesson, the Delhi Sultans. As the name indicates, the Delhi Sultans. What do you know about this that you will read in this lesson? According to the name of the lesson. Kings of Delhi. Yes, And Sultans of Delhi. Sultans of Delhi. Yes, Sultans means Sultan is the Arabic word, which means ruler. Sultan is an Arabic word, which means ruler, and the rulers who sat on the throne of Delhi. Rulers who sat on the throne of Delhi were called as Delhi Sultans. Am I clear about the name of the lesson topic? Yes, ma'am. So what we Yes, are going ma'am. to read about in the lesson, you are going to read about the rulers who sat on the throne of Delhi. Clear? Now, in the chapter 2, we saw that the regions like Kaveri Delta. Now, in chapter 2, you have read about the Kaveri Delta region. It was very fertile region, and 3 kingdoms fought. That was called as tripartite struggle for this region. Do you remember this? Yes. Which were the 3 regions or 3 kingdoms who fought for this Kaveri Delta region? And Tamil Nadu and Karnataka. Tamil Nadu, 3 kingdoms were there, beta. 3 dynasties were there. Ma'am Chola. Ma'am Cholas, Raz and Pandya. Chola, Cheras and Pandyas. Beta, 3 dynasties were there who were involved in this, Kaveri Delta region, or we can say Kannauj, Ganga Valley Plain. Sorry, they were fighting for the Ganga Valley Plain in Kannauj. Ma'am, Gujar Pratihara, ma'am, Very Rashtrakuta, good. and ma'am, Pala dynasty. Very good, very good. They were fighting for the Ganga Valley. So the same thing here, we have seen that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdom. Here, near the Kaveri Delta region, many new kingdoms arose. Now, did you notice that there were no mention of the kingdom with Delhi as its capital? Now, when many kingdoms had the many kingdoms had their regions near Kaveri Delta region. Kaveri Delta region was the particular area near Kaveri River. Clear? So no mention till the kingdoms, till the previous lesson we have seen many kingdoms were there. We have seen Gurjar Pratiharas, Rashtrakutas, Palas, Cholas, Chaimans, but we have seen that nobody has mentioned about the Delhi as its capital kingdom. Yes or no? Delhi was that Yes. time no more capital. Now that was because Delhi became an important city only in the 12th century. Delhi कब बनी important city? 12th century में ही Delhi important. in 12th century. Very good. 12th century में ही Delhi important city बनी. इसीलिए इससे पहले जो भी kingdoms आए, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, they had not mentioned Delhi as their capital. So Delhi became underline this, Delhi became an important city only in the which century? 12th century. 12th century. 12th century. Now look at the table. Delhi first became the capital of the kingdom under the Tomar Rajputs. Underline this also. 1 mark question can be asked. When did Delhi became the capital of Tomar Rajputs? First capital. First capital under Tomara Rajputs. Tomara Rajput. Clear? And these Tomara Rajputs, ये जो Tomara Rajputs थे, they were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans. अब इनको तोमार राजपूत को किसने डिफीट कर दिया, किसने हरा दिया लड़ाई में? चौहान्स ने. चौहान को कौन से नाम से और से जाना जाता है? चहमान्स. And these Chauhans were the rulers of Ajmer. These Chauhans were rulers of
Ajmer. Now, Ajmer. clear about this? Delhi became first capital under the which Rajputs? Tomar Rajputs. And after Tomar Rajputs, Maharaj. they were defeated in the 12th century. Chauhan's had of Ajmer had the over Delhi as their capital. उसके बाद जो तोमार ने दिल्ली पर किसने कैपिटल बना लिया अपना? चौहान ने तोमार के बाद. Clear? Yes. Okay, now. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became the important commercial center. Now, when Delhi was under Tomars and Chauhan rulers, it became an important commercial center. Commercial center means the business center. Clear? For the profit making. So many rich Jain merchants lived in the city. Many rich Jain, when as Delhi became the commercial center, very important commercial center, the business center under Tomars and Rajputs, Chauhans, then what happened? It became the center of the many merchants. Many merchants started living in city of Delhi and constructed several temples also, especially the Jain merchants. The Jain businessmen came to live in the city of Delhi who wanted to do the business and as it was the commercial center. And then there only they had made several temples also. Coins minted here called Delhiwal, Delhiwal. wide circulation. Now underline this. What were the coins called as, which were minted in Delhi? Delhiwal. क्लियर? दहलीवाल. दहलीवाल में जो कॉइन्स बनाए गए उनको दहलीवाल के नाम से, दिल्ली उसे में जो बनाए गए उन्हें दहलीवाल के नाम से जाना जाता है. एंड इट हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और वो वाइड सर्कुलेशन मीन्स हर जगह सर्कुलेट किए गए, हर जगह उनको काम में लिया गया. क्लियर? Now the transformation of Delhi into a capital. Transformation of Delhi. Transformation means change of Delhi into the capital. पहले तो सिर्फ एक city के रूप में देखा जाता था, but now as Tomars had became made this Delhi as their capital that control vast area of the subcontinent, started with the foundation of Delhi Sultanate. अब Delhi क्या हुआ? Change हो गया from Delhi to it became the capital city. And when it became the capital city, it had a vast areas of subcontinent. अपने अंदर बहुत बड़ा एरिया उन्होंने फाउंडेशन किसने डाला? ये दिल्ली सुल्तान्स ने, दिल्ली सल्तनत ने, in the beginning of the 13th century. Now Delhi became the what? Center of administration. Clear? The transformation of Delhi into the capital that controlled vast. Then Delhi became what? Delhi Circle of सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहां से उसके अंडर में बहुत सारा एरिया, इंडिया का, हर सब कॉन्टिनेंट हम बात कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया दिल्ली के कंट्रोल में आ गया. मीन्स जो भी दिल्ली सल्तनत पे रूल करता था, दिल्ली की थ्रोन पे बैठ करके रूल करता था, उसके अंडर में बहुत सारा एरिया रूलिंग के लिए आ जाता था. क्लियर? Then we have to underline this. You can underline this, that the transformation of Delhi, transformation means the change of Delhi into the capital that control vast area of subcontinent, started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. 13th century में थोड़ा बहुत change आने लगा दिल्ली में as a capital city. Clear? Now take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together make the Delhi Sultanate. Of Delhi Sultanate, Delhi means Delhi, Sultanate means where the people, Sultan, the rule of Sultanate, the rule of Sultans are there. That is called as Sultanate. Rule of Sultan. Sultan is an Arabic word. Arabic word means it is taken out from the word Sultan is derived from the Arabic word. Clear? That means ruler. उसका मतलब होता है ruler. और Sultanate मतलब all the rulers who sat on the throne of Delhi. Clear? Now 5 dynasties they are asking together which make Delhi Sultanate. Here we can see dynasties are not there, but we have seen here Shri,
Janpanha, Delhi Khwana, Tughlakabad, and Adilabad. They mostly these areas considered as Delhi areas. Clear? The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as Delhi. दिल्ली के नाम से अब माना जाता है, बहुत सारे cities इस दिल्ली के नाम से बनाई गई. And we can see that these areas are Delhi Ekwana. Here we can see mark here Delhi Ekwana. These are the cities, clear, which were made around the Delhi. Then Siri. Siri is here, you can look here in the map, mark it there with the pencil in the map itself. And Jahanpanah. Jahanpanah is here. Clear? So the Delhi Sultans built many cities. बहुत सारे शहर बनाए दिल्ली सुल्तान्स ने. दिल्ली के रूलर्स ने जो दिल्ली के थ्रोन पे बैठे, उन्होंने बहुत सारे शहर और भी बनाए, जिनमें से ये 3 नाम दिए गए हैं, Shri, Jahanpanah and Delhi Khwana. Clear? Now here is the chart given of the rulers of Delhi. The chart given of rulers of Delhi. Now who all sat on the throne of Delhi? That is who all were the rulers of Delhi. First, as we have seen that Delhi was made the capital under whom? Delhi was made the capital under whom? Tomorrow. So here began with the Rajput dynasties. The Delhi became under the as the capital city under Rajput dynasty. Tomara Rajputs. Tomara Rajputs. The strongest and the powerful ruler was Anangapala. Strongest and the powerful ruler was Anangapala, who ruled from 1130 to 1145. And total overall Tomars ruled for early 20th century 1165. Clear? After Tomar, please mute yourself, everyone. Raghav Bansal. Then Tomars were defeated by Chauhans. Chauhans started their rule and sat on the throne of Delhi and 1165 to 1192. Clear? In this, the most powerful ruler was Prithviraj Chauhan. Rule was from 1175 to 1192. आप ये देखिए, पूरा चौहान रूल तो 1165 से 1192 तक था, but the most powerful and the last Chauhan was 1175 to 1192 यहाँ रूल किया. और भी बहुत सारे रूलर्स आए, but we can say they were the not so much powerful or strong rulers. Clear? एक के बाद एक आए और दूसरे उनको डिफीट कर थ्रोन ऑफ दिल्ली पर बैठते गए. क्लियर? मैम. यस बेटा. मैम इधर मैम 1165 to 1192 लिखा हुआ है, तो फिर मैम इधर 1175 to 1192 क्यों लिखा हुआ है? Because that is why I have explained just now only. If you have not concentrated now, you can listen carefully. अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रूलर्स आए. ये एक ही पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे यहाँ चौहान डायनेस्टी में, बहुत सारे रूलर्स आए, बट यहाँ पर किन रूलर्स का नाम दिया गया है? Those who had strong hold on the Delhi Sultanate. जिसने जो पावरफुल रूलर्स थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, उनका नाम दिया गया है. प्लस देयर रूल वाज स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल था उनका रूल, यहाँ पर उनका नाम दिया गया बेटा. ठीक है? ओके मैम. इनके बीच में बहुत सारे रूलर्स आए हैं. Now early Turkish rulers. Now first was we have seen Rajput dynasty. Under Rajput dynasty we have seen Tomar Rajputs, and then they were defeated by Chauhans, and then Chauhan dynasty was there. Clear? Then we have seen the second after the defeat, means when Prithviraj Chauhan was defeated, the Turkish ruler came. Turkish ruler means Turks. Turkish rulers means Turks who belong to Turk. Then they
ruled from 1206 to 1290, 1206 to 1290. अब ये टर्किश रूल, यहाँ से मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है. कौन सा रूल शुरू हो जाता है? टर्किश रूल, मुस्लिम रूल. अब यहाँ पर जितने भी सुल्तान्स बैठे, नाउ द दिल्ली वाज कॉल्ड एज दिल्ली सुल्तान सल्तनत, बिकॉज यहाँ पर जितने भी सुल्तान बैठे, दे वर ऑल Muslim rulers. Clear? Now here, that is why we will read only in this lesson about Delhi Sultans. Delhi Sultans means the Sultans, the Arabic word it is. The Sultans who sat on the throne of Delhi. Especially we will read about the Muslim rulers here. Clear? Now Qutbuddin Aibak was the first Turkish ruler who sat on the throne of Delhi from 1206 to 1210. Then after Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish sat on the throne. After Shamsuddin Iltutmish, Razia Sultan. Razia was the only woman leader who sat on the throne of Delhi. Clear? And she was the daughter of Iltutmish. So Razia sat on the throne of Delhi from 1236 to 1240. After Razia, Ghiyasuddin Balban, and his ruling period was very short. Razia Sultan's ruling period was very short. Why? Because no man ruler did, no noble who were men, they did not like themselves to be ruled by the woman leader. Clear? इसलिए वुमेन को वो कोई अच्छा नहीं लगता था उनको कि वो वुमेन उनको लीड कर रही है. Razia was daughter of Shamsuddin Iltutmish. Yes. ठीक है ना. तो किसी भी नोबल को, किसी भी रूलर को अच्छा नहीं था, लगता था कि रजिया एज अ वुमेन लीडर वो रूल कर रही है देश को. इसलिए इनका रूल बहुत ही कम समय के लिए रहा, 1236 to 1240, because every noble started opposing this Razia Sultan. Then came Ghiyasuddin Balban. After Ghiyasuddin Balban, Khilji dynasty started. Khilji dynasty started. Clear? Khilji dynasty was from 1290 to 1320. In this, the powerful ruler was Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji reign was 1290 to 1296. Clear? Then Alauddin Khilji, next powerful ruler of Khilji dynasty, 1296 to 1316. Clear? Then after Khilji dynasty, Tughlaq dynasty was there. In this Tughlaq dynasty ruled from 1320 to 1414. Clear? In this, Ghiyasuddin Tughlaq was the most powerful ruler. Ghiyasuddin Tughlaq from 1320 to 1324. Then Muhammad Tughlaq sat on the throne. After Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq sat on the throne. Clear? Then after Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty was there. Sayyid dynasty was there, and the rule of Sayyids were from 1414 to 1451. The most powerful ruler was the Khizr Khan. Most powerful ruler was Khizr Khan, who ruled from 1414 to 1421. And last of the sultans were Lodi dynasty, who sat on the throne of Delhi, and they sat from 1451 to 1526, in which Bahlol Lodi was a powerful ruler. He ruled Delhi from 1451 to 1489. I hope all these dynasties are clear. Turkish rule start from Qutbuddin Aibak, then Shamsuddin Iltutmish, then Razia Sultan, and then Ghiyasuddin Balban. So all these dynasties came one after another. पहले एक डायनेस्टी उनको डिफीट करके दूसरी डायनेस्टी, पावरफुल डायनेस्टी आ गई, टर्किश रूल. अब टर्किश रूल शुरू हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि गियासुद्दीन बलबन वाज द लास्ट पावरफुल रूलर. फिर खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन ने ओवरटेक कर लिया उनको. फिर जलालुद्दीन बिकेम द पावरफुल रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. आफ्टर खिलजी, तुगलक. जैसे जैसे वीक रूलर जाते गए, दूसरी डायनेस्टीज उनको ओवरटेक करती गई. आई होप जलालुद्दीन खिलजी मैम मींस अकबर है क्या? नहीं बेटा, वो मुगल. अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए. यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अकबर और बीरबल और इन लोगों के नाम क्यों नहीं दिए गए.
because we are reading about the sultans of Delhi. Sultans means the Muslim rules. Muslim word है ना ये, सुल्तान, रूलर. Yes, सुल्तान का मतलब है रूलर्स. अभी हम ये यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रूल where the Muslim rulers sat on the throne. मुस्लिम के अंडर में आया दिल्ली. क्लियर? आप Okay, नेक्स्ट ma'am. लेसन टर्न करके देखो, आप लेसन नंबर 4 टर्न करके देखो आप, उसमें आएगा मुगल रूल्स. मुगल रूलर्स आप उसमें देखोगे, मुगल एम्पायर में. तो ये दिल्ली सुल्तान आया. Empire. यस. Yes, तो ma'am. यहाँ पर हम दिल्ली सुल्तान देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे. आफ्टर दिल्ली सल्तनत द मुगल रूल केम. दिल्ली सल्तनत के बाद बहलोल लोदी लास्ट था, उनके बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं था, तब वो मुगल रूल आया. क्लियर? एक के बाद एक रूल आया. फर्स्ट वी हैव सीन अर्ली इन द बिगिनिंग, वी हैव सीन व्हाट, दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स. स्मॉल किंगडम्स थे, स्मॉल डायनेस्टीज थी, राष्ट्रकूटास, पाला, चोलास. फिर वो स्मॉल डायनेस्टीज क्या हो गई, बड़े बड़े किंगडम बन गए. बड़े बड़े किंगडम बनने से क्या हुआ, अब तोमार्स उसमें आ गए पावरफुल रूलर्स के रूप में, और उन्होंने क्या बनाया, अपना कैपिटल दिल्ली को बना लिया. ये एक के बाद एक आप सीरीज चलती जा रही है. क्लियर? Yes. इन ma'am, वो इंडिया, Delhi- इंडिया में. क्लियर? अब दिल्ली सुल्तान बैठे दिल्ली पे, दिल्ली सुल्तान के सारे रूलर्स थे नाम. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? फ्रॉम वेयर डू वी नो अबाउट द sultans of Delhi? Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information. बहुत सारी information we get from inscriptions, coins and architecture. A lot of information, especially valuable are histories, tariq. Especially important is the tariq. Sorry. हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, तारीख. इट इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड त्वारीख इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख. त्वारीख इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख. रिटन इन पर्शियन, पर्शियन में लिखा गया है ये तारीख और त्वारीख. एंड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान वाज पर्शियन. क्लियर? Yes. हेलो. ma'am. मुस्लिम रूल वाज दे, सो Yes, दे वर ma'am. कॉल्ड एज सुल्तान्स. और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान वाज पर्शियन लैंग्वेज. क्लियर? And from where do we get the knowledge about these all sultans? We get the knowledge about the sultans from inscriptions, coins, architecture, twarik, which are written in Persian language. Twarik or tariq. Clear? Now 4 stages in making of manuscripts. First, we will read this. The authors of tariq, those who have written tariq. Authors means those who have written the tariq were learned men. बहुत पढ़े लिखे लोग थे. सेक्रेटरीज, अभी लर्नेड मैन कौन कौन थे जिन्होंने तारीख लिखी है? दे वर सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. ये लोग जो थे बहुत learned लोग थे, and they even advised the rulers. एडवाइस भी दिया करते थे वो रूलर्स को कि किस टाइप से वो रूल करें, किस टाइप से वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, किस टाइप से वो जस्ट रूल, अ पीसफुल रूल इन एडमिनिस्ट्रेशन, पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो सेटअप कर सकते हैं अपना. सो दीज वर द लर्नेड पीपल हु हेल्प्ड द रूलर्स in giving the advice how to govern the country. They even had written the tariq. I hope till here it is clear, beta. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Okay, now figure 1. Figure 1 shows the 4 stages of making of manuscripts. Manuscripts की 4 stages है. You know manuscripts are very important Yes, ma'am. to get the information about our past. So how these manuscripts were prepared? In first stage, preparing the paper. Paper prepare किया जा रहा है. Then writing a text. उस paper पे text लिखा जा रहा है जो भी है. Then melting gold to highlighting important words and passages. अब यहाँ पर जब दिल्ली सुल्तान सल्तनत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किंगडम्स में manuscripts इस टाइप से लिखी जाती थी. यहाँ पर पेपर पे लिखी जाती थी. पहले in the beginning of the period, in early years we have seen manuscripts are written on the barks of the leaves, barks and leaves of the trees, है ना?
ट्रीज की लीव्स Yes. पे और बाग्स पे, उनके पेड़ों की छालों पे लिखा जाता था. नाउ इट इज बीइंग रिटन ऑन द पेपर. राइटिंग द टेक्स्ट ऑल्सो, देन मेल्टिंग द गोल्ड, गोल्ड को मेल्ट करके, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या पैसेजेस है उनको हाईलाइट करने के लिए वो गोल्ड से लिख भी रहे हैं. क्लियर. एंड लास्टली प्रिपेयरिंग अ बाइंडिंग, बाइंड कर रहे हैं बुक को. क्लियर. दीज वर द 4 स्टेजेस ऑफ, underline this, what were the 4 stages of manuscripts, how the making of manuscripts is done. Yeah, define the making of manuscripts in 4 stages. Clear. Now circle of justice, this is a paragraph. Circle of justice. Fakir a Mudabir wrote in 13th century. 13th century में ये एक राइटर थे, क्रॉनिकलर थे, जो वहां पर उन्होंने लिखा. क्या लिखा? अ किंग कैन नॉट Excuse me, ma'am. सर्वाइव. यस यस. Ma'am, what is binding? बाइंडिंग मीन्स बुक बाइंड करते हैं ना, ताकि पेपर लूज नहीं हो जाए. पेपर लूज नहीं हो जाए, उनको पूरा पाइड अप करके, पूरा एक साथ करके उनको बुक के रूप में बनाया जाता है. Okay, ma'am. है ना, बाइंड किया जाता है उनको. देन Yes, ma'am. now here Fakr a Mudabir, he was a chronicler, he wrote in the 13th century. Now what he wrote about the circle of justice. क्या है circle of justice? A king cannot survive without soldiers. Without soldiers means soldiers के बिना king नहीं रह सकते. राजा soldiers के बिना रह सकते हैं कभी? राजा No, का ma'am. एग्जिस्टेंस मान सकते हैं कि राजा का एग्जिस्टेंस हो सकता है मिलिट्री के बिना? No, ma'am. नहीं हो सकता. बिना सोल्जर्स के, बिना राजा की फौज के राजा कैसा राजा, है ना? क्योंकि वो फिर आक्रमण कैसे दूसरे राजा को अपने अंडर में लेगा, दूसरे एरियाज को. सो द किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. राजा बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं रह सकता. एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. और सोल्जर्स को सैलरीज देना बहुत जरूरी होता है. विदाउट सैलरी सोल्जर्स विल नॉट डू द वर्क फॉर किंग, will not fight the war for the king. So salaries come from revenue collected from the peasants. और ये salaries कहाँ से आती थी soldiers को देने के लिए? Salaries कहाँ से आती थी soldiers को देने के लिए? From the revenue collected from the peasants. Peasants से जो tax collect होता था, जो revenue collect होता था, वो peasants भी समझते हो ना, farmers, जो farmers से टैक्स लेते थे, एग्रीकल्चर फार्मिंग पे जो टैक्स लेते थे, वो कलेक्ट करके सैलरीज के रूप में सोल्जर्स को दिया जाता था. एंड देन ओनली सोल्जर्स यूज्ड टू वर्क फॉर किंग. क्लियर. बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी. अब पेजेंट्स से चलो रेवेन्यू लेकर के सोल्जर्स को पेमेंट दिया जाता था, पर पेजेंट्स कब पेमेंट कर सकते थे, कब रेवेन्यू पे कर सकते थे? जब उनके पास खुद के पास होगा और वो खुद खुश होंगे. जब उनके पास खुद के पास होगा और वो खुद खुश रहेंगे सोसाइटी में, तो when they were themselves prosperous, rich होंगे और happy होंगे, then only they will be able to pay the revenue to the king for the salaries of the soldiers. Clear. Now this happened when the king promote justice and honest government. अब peasants, farmers का prosperous और happy होंगे जब राजा उनके लिए अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, अच्छा जस्टिस प्रोवाइड करेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे. राजा सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे. द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन वेरी ऑनेस्टली. सो देन ओनली द peasants will be happy. तभी peasants happy होंगे, prosperous होंगे. And peasants will be prosperous and happy. They will definitely pay revenue to the king, and then king will be able to pay the soldiers, salaries to the soldiers, and then soldiers will be able to fight for the king. So this is the circle of justice. इसे क्या बोलते हैं? Circle of justice. कि अगर आप एक का ख्याल रखोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप अच्छा महसूस करेगा और वो आपका हेल्प करेगा. क्लियर. Yes, ma'am.
Okay, now keep the following additional details in mind. अब ये additional details है, you should keep it in mind. What are the additional details? First, the author, the authors, the authors of Tariq lived in cities. First important thing to be kept in mind is the authors of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. जो writers थे जिन्होंने उस तारीख के बारे में लिखा है, जिन्होंने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में लिखा है, वो मोस्टली कहाँ रहते थे? सिटीज में. क्लियर? वो मोस्टली कहाँ रहते थे राइटर्स? सिटीज में और दिल्ली में मोस्टली. एंड वो विलेजेस की तरफ तो जाते भी नहीं थे, बहुत मुश्किल से वो विलेजेस में देखने को मिलते थे. कौन विलेजेस नहीं जाते थे? तारीख के राइटर्स. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Yes, ma'am. Second, they often ma'am. wrote their histories for sultans in the hope of rich reward. दूसरी बात थी ये कि they often wrote the histories of सुल्तान. सुल्तान के बारे में वो जो भी लिखते थे, किसके लिए लिखते थे? ताकि सुल्तान उनको रिच रिवॉर्ड्स दे, अच्छा महंगा रिवॉर्ड्स दे, प्राइजेस दे, गिफ्ट्स दे. इसीलिए वो सुल्तान के बारे में लिखते थे. क्लियर? Why these Tariqs, authors of Tariqs wrote about the sultans? In the hope of getting the rich rewards. Third, the authors advised rulers on the need of to preserve the ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their idea were not shared by everybody. Now these authors used to advise the king about the ideal. कौन सी ideal? Ideal means the law, the rule. वो ये एडवाइस करते थे कि ये रूल होना चाहिए कि एवरीबडी शुड बी हैविंग द प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू द बर्थ राइट. बर्थ से ही उनको जन्मसिद्ध अधिकार मिलना शुरू हो जाना चाहिए. जैसे अगर कोई नोबल है तो उसको नोबलिटी के जो प्रिविलेजेस हैं वो उसको, अगर नोबल फैमिली में कोई बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसको नोबल फैमिली के अकॉर्डिंग ही उसको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए. जो फार्मर फैमिली में बॉर्न हुआ है उसको फार्मर के अकॉर्डिंग ही privileges मिलने चाहिए. Clear? So the authors advised ruler that there is need to preserve this law of birthright and gender distinction. Gender distinction was also there कि आप एक भेदभाव की भावना रखना चाहिए कि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन शो होना चाहिए. I hope till here it is clear, everyone. Yes, ma'am. Okay. Now till here only I make up an end of today's class. In our next Okay, class, ma'am. we'll continue with this Iltutmish daughter Razia Sultan's story. Clear? Till then, Yes. read till here, and if any doubt, you can ask me. Okay. And next class, we'll continue with this Razia Sultan. So that's all for today. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Have a